हमारा जिक्र तो पहले ही था जमाने में, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में. Hello everyone, my name is Amir Kutub and welcome to another live session with me. And the topic of today's discussion is how to start your tech startup. Now this is a live Q&A section. Live Q&A question. It's a live Q&A section. Or what I'm going to do in this section is I'm going to answer your queries about a tech startup. I'm going to give you some tips about technology startup as well. The format is pretty simple. You can enter your questions in the comment section. If you have got some ideas related to tech startup, you can do that as well. But today we'll try to stick to our topic, which is startups, right? So let's not talk about careers. Let's not talk about jobs. Let's talk about startups so that we can all be benefited through this. We've got Faisal Ahmed saying, hello, sir. Hi, Faisal. Thanks a lot for joining my live session. Let me know by comments if my audio is not clear, if you've got any problems at all. Muhammad Asif is saying, very helpful live. Please keep it up, sir. Thanks a lot, Muhammad Asif. You're most welcome as well to this live session. So, to give you a bit of context about tech startup, first of all, it's important to identify how a tech startup is different from general businesses or lifestyle businesses. So, lifestyle businesses are the businesses which you create and you have to continuously keep working on a lifestyle business. And those lifestyle businesses are generally not scalable. For example, if you decide to open, say, a factory, or if you decide to open a cafe or a restaurant, those are lifestyle businesses. Or if you take a franchisee, say of a McD or KFC, so those are lifestyle businesses where you are actually going into a business so that you can be free from your job and then you can keep earning through it. But the challenge with lifestyle businesses is that they are not scalable. You cannot scale them pretty fast. It takes a lot of time and efforts and years to actually scale them to a particular limit. Whereas technology startup are a much more high risk proposition, because tech startups generally fail, and I'll tell you the reasons of why those tech startup fails. But tech startup is something that's actually scalable, and you develop those startups, you develop a product which can be used on a global scale, and it can be scaled pretty quickly. So it has the potential to scaling up pretty fast in 2 to 3 years. So if you are creating a web services company, like a web development company, you cannot call it a tech startup. For example, I run one of an app development company, a digital services company. I cannot call it a tech startup or a technology startup because it is not scalable. So when I'm talking about tech startup, I'm talking specifically about developing services or products that could be scaled at an exponential rate, so that investors who are investing in the startup get a quick investment back. एक्सप्लेन दिस इन हिंदी. अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस ऑफरिंग आप ऐसी बना रहे हो जो पूरी दुनिया में बहुत क्विकली फैल सके, और जैसे आपने शुरू किया था तो उसका वैल्यूएशन जो है वो 0 था, या पहले साल में उसका वैल्यूएशन मान लीजिए अगर $1 मिलियन था, तो नेक्स्ट 3 या 4 साल में उसका वैल्यूएशन 20 मिलियन 50 मिलियन हो सके, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो है इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल सके, उसको हम लोग बोलते हैं टेक स्टार्टअप. एवरीथिंग एल्स विल नॉट बी डिफाइंड एज अ टेक स्टार्टअप. there's a very common thing in India, especially कि इंडिया में क्या करते हैं कि हर कंपनी जो भी स्टार्ट करता है, बंदा बोलता है मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ. सो यू कैन कॉल इट स्टार्टअप बिकॉज यू आर स्टार्टिंग समथिंग अप, बट जो डेफिनेशन है उसकी स्टार्टअप की, वो ये है कि आप कोई सा भी ऐसा वेंचर क्रिएट कर रहे हो जो बहुत क्विकली जो है वो स्केल हो सके, ग्लोबल लेवल पे स्केल हो सके, एक्सपोनेंशियली स्केल हो सके, और उसको आप स्टार्ट करो, 3-4 साल जो है चलाओ, ग्रो करो, और फिर उसके बाद उसको सेल कर दो, और उससे जो आपको रिटर्न मिले वो मल्टीपल टाइम्स हो जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था. All right, so let's take some questions, and what I'll do is I'll try to use a bit of mix of Hindi and English, because I've got some feedback that some people like to get some answers in Hindi. तो specifically अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर मैं हिंदी में दूं, तो please put it in the question itself, sir. Please answer in Hindi, and I'll be more than happy to answer them in Hindi. All right. So Asif is asking, sir, how can we start business without money? I have degrees, possible or not?
or part time, any job idea, please suggestion. All right, Asif is saying that how can I start a business without money? Okay, Asif, so what happens is, okay, there are different types of businesses, right? So there are some businesses who have got a lot of requirement of money, where you need a huge amount of capital to start up, so, and that's your call your base capital. But there are a lot of businesses that can be started at a very low capital. So any service based business can be started at a very low capital. For example, app development organization. So I created Enterprise Monkey initially as an app development company, web and app development company. And when I started it, I didn't have a huge amount of money, so I started at a very low investment. So कोई भी service जब आप provide कर रहे हैं, for example, if you have got a skill, say whatever, graphic designing is a skill, digital marketing is a skill, web development, app development skill, content writing is a skill, or any service that you are providing जिसमें human resource जो है, that is going to be used as your primary capital, your skill is your primary capital, उसमें आपको पैसे की जरूरत नहीं होती है. Now you have also mentioned something where you're saying that I have degree. Look, your degree and your startup has no relation. और आप जो डिग्री कर रहे हो उससे आपके स्टार्टअप को या बिजनेस को कोई फायदा नहीं होगा. देयर इज अ मिथ के स्टार्टअप के लिए जो है वो एमबीए करना जो है वो जरूरी होता है या इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो स्टार्टअप की मेथोडोलॉजी होती है, जो एजुकेशन होती है, दैट इज completely different. That is not available through these degrees at all. All right, Krishna Ponkia from LinkedIn is saying, I'm developer and I want to start a small company, but I don't have lead of projects. So how can I get a lead? That's a great question, Krishna. So if you are a developer, I would actually encourage you to, first of all, create your own website, create your own brand. Secondly, Krishna, what I would encourage you to do is start working as a freelancer. Create your profile on upwork.com. And try and bid on some projects over there. So that's a good way to get some freelancing gigs. So once you start working as a freelancer, once you start getting some leads from there, I think that's a good idea. The next thing that you could do is that once you have created your brand, like your company, what you could do is you could reach out to people on LinkedIn. Now, when I'm talking about reaching out, जब मैं अपना business start कर रहा था, I was reaching out to like 50-100 people every single day. And then I was doing it every single day. तो मैं ऑनलाइन भी लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर रहा था. मैं तो जाके जो है वो अपने बिजनेस कार्ड्स भी जो है वो दे रहा था. So right now it's pandemic, so you cannot go out and meet a lot of people. But what you can do is you can spend 2 or 3 hours on LinkedIn every single day. First of all, आप अपनी LinkedIn profile जो है, just make sure that you put it in headline that I'm actually available to work. And I'm looking for work opportunities. Tell them what type of development company you have started, and then reach out to at least 100 existing agencies that are out there. Indian agencies को contact मत करिए, बाहर की जो भी agencies हों, उनके CEOs को, उनके CTOs को, उनके founders को आप contact करिए. Just reach out to them and develop connections, genuine connections every single day. जब आप उनको रीच आउट कर रहे हैं, so do not say I've got a company, we do this and this work, please give us job opportunity. No one is going to do that. What you have to do is, Krishna, you have to build a genuine connection first. उस बंदे की प्रोफाइल पे जाइए, look at their profile, read what's written, look at what they have done, and then send them a message saying, hey Amir, I have looked at your profile. I found it really inspiring, and the work that you have done on ComWriter project is absolutely amazing. I would love to, and then tell them about yourself, that I have just founded a development company, and I would love to learn from your experiences and have a discussion with you. So that's how you reach out to them. Then you start chatting with them on LinkedIn. And then you ask them for a Zoom call. Then say, can we set up a Zoom call? Again, rather than selling them your service, you tell them about who you are, build that trust, and then ask them, can you please give me like a small project that I can work with? Give it to me for free so that I can get started. And if you like my work, then you can offer me more work. That's how you do it. But आपको ये करना है scale पर. पता है कितने scale पे? You should be reaching out to 100 people every single day.
रोज आइए, बैठिए 2 घंटे शाम में लैपटॉप पे, रीच आउट टू 100 people every single day for the next 30 days. So you would be reaching to 3,000 people. और आप सोचो उससे कितनी लीड्स मिलेंगी. लोग क्या करते हैं ना, इसको काफी रोबोटिक तरीके से करते हैं ना, जस्ट सेल्स मैसेज भेजने लगते हैं. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस. वंस यू बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन, वंस यू बिल्ड जेन्युइन नेटवर्क, देन यू विल बी एबल टू डू दैट इजीली. सेकेंडली, meetup.com इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग रिसोर्स. उस पर चेकआउट करिए, कोई मीटअप्स हो रहे हैं, अगर वर्चुअल मीटअप्स हो रहे हैं तो अटेंड दोज वर्चुअल मीटअप्स. गो, इफ देयर आर पैंडेमिक खुल जाता है तो गो विथ योर बिजनेस कार्ड्स, शेयर योर बिजनेस कार्ड विद अदर पीपल. एंड द थर्ड थिंग इज दैट आस्क your connection on LinkedIn to refer them to the other people. For example, अगर आपको कोई बंदा मिलता है LinkedIn पे जो कि डेटा एजेंसी से रिलेटेड है, एंड यू वांट टू रीच आउट टू देम, एंड दैट पर्सन इज योर सेकेंडरी कनेक्शन, तो ये चेक करिए कि उनके और आपके बीच में कौन म्यूचुअल कनेक्शन है. एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट म्यूचुअल कनेक्शन, देन ask that mutual connection to refer you to them. And by doing that, by asking them to refer to them, what you're doing is you're developing that bridge, you're developing that referral, and now the other person would be willing to talk to you because you are coming from a trustworthy source. So use your LinkedIn very well. If you are using, you can generate a huge amount of business just by using LinkedIn properly. I think people don't realize how important it is to do that. I hope I answered that question. Hasnan Ali, I'm a HR professional. How can I start my own consulting firm? Hasnan, I would actually depends on what type of HR consulting that you want to start. Whether it's in recruitment, whether it's in IR consulting, whether it's in compliance. So there's so many HR fields. You have to first of all identify what is that niche that you want to work on. What is your niche, and then identify what is the main problem with the industry. Why would someone need an HR consulting firm? Whether if it's recruitment, I know there are a lot of companies who are looking for recruitments, but if it's a different type of consulting, you need to define what is that need. From there, again, develop a brand. What a lot of people do is they do not develop a good brand from the very beginning. It's extremely important. It's a saying in Hindi ke jo dikhta hai wahi bikta hai. Right? So it's extremely important that you are developing a nice, decent brand. Because if you're not developing a brand which is good enough, which is attractive enough, then your consulting would not look reputable enough. So most important that you do that. और brand बनाने का क्या तरीका है? First of all, think about a name that's actually available on the domains. Secondly, develop a professional logo. Now, professional logo is again something जिसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप fiverr.com पे जाओ, $5 मतलब $250 में, $300 में जो है वो आपको लोगोज मिल जाएंगे. थोड़ा सा और पैसा आप स्पेंड करेंगे, आपको और बेटर लोगोज जो है वो मिल जाएंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम देयर, डू अ बिजनेस कार्ड, improve your LinkedIn profile. अपनी LinkedIn profile पे लिखिए कि what you are actually offering, how are you helping the people, and then again start reaching out to your customers. अब आपके customers कौन होंगे? As an HR consulting firm, it's mainly other company HRs who are hiring HR consulting firms. So start making connections. The thing that I was telling earlier as well, start building connections with other people in that industry. Again, rather than trying to sell your services, reaching out to them genuinely, looking at their profile and saying that, look, I'm also an HR professional and I looked at your profile, you're doing an absolutely amazing job, and I would love to know a bit more about you. And that's how you reach out to them, talk to them about it. And then once you have developed that trust, then you actually ask for help. Say, can you refer me to an opportunity that you might have, because I'm starting something like this. That's the way to get your first few initial clients. Once you get your first few initial clients, the things are easy from there, because then you have built your trust, then you have built your trademark, and it's generally much more easier from there. I'll just show you one thing. So the thing is that if you try to sell anything, for example, if I try to sell you a watch, right, you might pay me whatever, 1,000 rupees, 2,000 rupees, or whatever it is, right? Now, there are companies that have actually established their brand, and people would pay crazy money
to buy the watch that still do the same time. Like sometimes there are smart watches, they'll do a bit more. But for example, this company, Tag Heuer, right? So they have built their brand because of they have built their reputation. Once the reputation is there, people would spend thousands of dollars, like lakhs of rupees, to buy a piece of watch from them. Why? Because the brand value is there. People trust their brand. As soon as they listen to it, they are more than happy and willing to do it. So it's extremely important to build on, first of all, your own personal brand. So identifying who is Hasnan Ali, right? I see a lot of clients, because I have established three businesses. I invested in 8 tech startups. A lot of biz clients come to my company because of my brand. Like they say, all right, this company, Amir has invested in this company, so they are more than willing to buy. One of my employees actually called me today and told me that I applied for, like I did a rental application in Australia. You have to do rental applications, and to get that rental, there was a lot of competition. But the actual person who was offering the rent, he said that your boss is Amir Kutub, and I know your boss, so I would be more than willing to do that. I was able to do that because I was actually out there and I was building my brand. And one thing that's important to build your brand is your presence on social media. अगर आप कोई से भी प्रोफेशनल हो, चाहे आप एचआर प्रोफेशनल हो, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, डजेंट मैटर, राइट? You should be on social media producing content every single day. और बहुत टाइम नहीं लगता है कंटेंट बनाने में. बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं कंटेंट बनाने के लिए. ऑल यू नीड इज योर फोन, जस्ट योर फोन. इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, 15 सेकंड रील्स, राइट? लिंक्डइन पे छोटी छोटी स्टोरीज, जस्ट एनेक्डोट्स, वेरी सिंपल स्टोरीज अबाउट योर करियर, some small insights that come from you. It doesn't need to be something very fancy. Just talk about the stuff that you are doing. Build genuine connection. Share content, create content as much as you can. If you are going to create a lot of content, then you will build your brand. People would see you as an industry leader. People would be able to trust your brand as well, and then you will be able to grow your business from there. All right, Fuad Ahmed. Hi, Amir. I've been sending requests to people, but most of them are not accepting. What can I do? I'm also sending messages. Fuad, tell me, what message are you sending? Can you actually mention in the comment right now what message are you sending to those people? Are you looking at their profile and then saying and then pointing out the thing that you are liking about their profile? Are you saying, are you using this format saying, hey, whatever, Amir, I looked at your profile. For example, what I'll do is I'll just do a quick share. And I'll actually go to LinkedIn right now. And I'll probably go to your profile for others as well. And I'll tell you, if I look at your profile, how am I going to send you a message? We'll just do a bit of play there. So, or any profile for that matter. The first profile that came on my one, I'll just we'll just open that up and then we'll talk about it. Very first thing is कि आप request भेजने से पहले पढ़ो कि बंदा कर क्या रहा है, right? So, for example, this guy is in China Digital Marketing International Education, helping this girl helping Western organization to enter the China market through retail channels. That's not enough. Read her the about us section, and then read what is she sharing, right? If she has actually written any post, or if she has done any comment at all. Read her about her experience. So you actually have to go through what you have done. Then what I'll do is, to find something more interesting to talk about, I'll just go to her activities and see if she has posted any post. I'll look at her posts and I'll just keep on scrolling. And then suppose I look at this post, and she has talked about, it's important to know that traveler confidence is key. So what I'll write to her is, hi Melody, I've been following your profile for a long time, and I saw your post about traveler confidence. I really liked it.
I feel it's an important factor. My views are traveler confidence can be increased in way A, B, C. What are your thoughts about it? By the way, I would love to be in touch with you and then talk about, okay, by the way, I am Amir, and I run this, or I'm this and that, and I would love to stay in touch with you. Something like that, like a message that tells them that you are serious about them. You have read through their profile, read through their post, and then you have pointed out something that might be of their interest. Also, maybe offer some value to them, maybe offer a correction to them, maybe offer something like, how about you talk about this, or I saw your post, you pointed these things, how about you mention these things as well. And just by doing that, what you are doing is you are developing that one-on-one connection, genuine connection with that person. A person would be more likely to talk to you. The problem is that I receive a lot of messages where people would just say, I would receive a lot of sales messages where people would say, we have got this in this company and we would love to, would you like to get use our services? Sorry, I'm not interested in using your services because I don't know you, mate. Like, why would I buy from you if I don't know you, right? Why would I develop a connection with you if I don't get any value in talking to you, if I don't even enjoy talking to you? So it's like, हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग व्हाट वी थिंक इज के ये जो सोशल नेटवर्क है ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, और जो वैसे असली जो सिस्टम्स होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है. ऐसा नहीं है. सोशल नेटवर्क और जो आपके जो असली इंटरेक्शन होता है, इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड. तो आप असलियत में जैसे लोगों से बात करते हो तो ऐसे तो नहीं होता ना, जाते ही हाय आई एम दिस और आई वांट टू सेल यू दिस सर्विस. यू डोंट डू दैट, राइट? यू रीच आउट टू दैट पर्सन, हे से अरे मैंने आपको यहाँ देखा था, मैंने आपकी बड़ी जो है वो तारीफ सुनी है और बड़ा अच्छा जो है वो आप काम कर रहे हैं, मैंने भी जो है इस फील्ड में जो है काम किया है, समथिंग लाइक दैट. And then other person says, acha, what have you done? And that's how you build that connection. So you have to replicate the same thing on LinkedIn as well. All right, guys, we've got lots of questions. We'll come to those questions one by one. Mohammad Faisal, Assalamu alaikum, bhai. Right now, I am doing digital marketing course. What kind of opportunity I get in Gulf country? Okay, the thing is, Mohammad Faisal, you're doing a digital marketing course. It's important to identify कि आप उसमें skills क्या क्या सीख रहे हैं और आप उसमें experience क्या क्या gain कर रहे हैं. There are a lot of people out there who are doing the digital marketing course, right? But the digital marketing is a very competitive field in itself, right? But the scale of this is that every company out there need digital marketers. अब क्या है कि आपके जो ट्रेडिशनल मोड्स थे, न्यूज़पेपर, टीवी, ये जो है इनका शेयर जो है रिड्यूस होता जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का शेयर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. सो एवरी कंपनी आउट देयर, चाहे वो गल्फ में हो, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में हो, दे ऑल नीड डिजिटल मार्केटर्स, but they need good digital marketers. So if you are good with your field, then there are a lot of opportunities in Gulf. You can start your own business as well. You can work as a freelancer as well. You can get a job in digital marketing as well. AR World Medicine Stockist is saying, I have a pharma business that I want to start in Australia. Okay, so the one thing that I would like to tell you is that in Australia, pharmacy in itself is there are a lot of compliance in the whole pharmacy industry, and it's dominated by a few big players. So it's important to see how you can navigate that market. It's a very tough market to be in Australia because it's dominated by large players, and their level of checking, the approvals and everything is like pretty difficult. So I'm not sure how established you are with where you are, but it would be worth reaching out on LinkedIn. आप चेक करो ऑस्ट्रेलिया की टॉप 10 जो है फार्मेसी कंपनीज, and then reach out to their executive people who are working on there on LinkedIn. आप LinkedIn पे उनको reach out करिए and then talk to them about it. बोलिए again, मैं भी एक pharmacy business run करता हूँ, and I just wanted to talk to you, get some ideas of you, really like your profile, blah blah blah. Develop a genuine connection with them and talk to them about it. They will be able to provide you a better insight on the industry as well. All right, Sayyid Ali, doing a job for a long time becomes so monotonous. How can I start my own startup with minimum capital? Will it be a good thing to venture out as all of robust economies are collapsing due to this pandemic? Kindly suggest. Sayyid Ali, when you are saying that doing
a job for a long time becomes so monotonous and you're saying that's why you're thinking of starting a startup, I would strongly discourage you from starting your own startup. मैं कहूँगा भाई, do not get involved in a startup just because you are bored of your job. A lot of people make this mistake because लगता है कि startup is a very fancy word. लोगों को लगता है कि यार स्टार्टअप का जो है दौर चल रहा है, मैं भी अपना स्टार्टअप जो स्टार्ट करता हूँ, मुझे बॉस की गुलामी नहीं करनी है, मैं अपनी जॉब में बोर हो गया एंड नाउ आई विल स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप. द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट जो है वो बहुत बहुत कम होता है. स्टार्टअप का सक्सेस रेट जो है वो 98% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 2% सक्सेसफुल होते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे जो है वाले जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं. इंडिया में स्टार्टअप्स का फेलियर रेट और ज्यादा है. इंडिया में स्टार्टअप का फेलियर रेट इज 99 पॉइंट समथिंग एंड पॉइंट समथिंग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं. You know why? Because startup journey is very long, very tedious, very difficult. And I only advise that if you are so passionate कि आपको उसके बिना नींद ना आए, भूख ना लगे, आपका पागलपन इतना ज्यादा सवार हो जाए, तब तक आप स्टार्टअप वर्ल्ड में मत जाइए. और स्पेशली ये मत सोचिए कि मुझे अपनी जॉब से एस्केप करना है या मैं अपनी जॉब से मोनोटोनस है, मैं बोर हो गया तो मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में चला जाऊं. इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया में सबसे आसान काम है वो है जॉब करना. अगर मैं बिजनेस से कंपेयर करूं उसको, तो किसी भी बिजनेस रन करने से स्टार्टअप्स आर एट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. स्टार्टअप्स इज द मोस्ट हाई रिस्क थिंग. फिर आपके लाइफस्टाइल बिजनेसेस आर लाइक मीडियम रिस्क एंड जॉब इज लाइक द लोएस्ट रिस्क थिंग. So even if you think a job karna is monotonous, that's not a good enough reason to leave a job. What I could encourage you to do is switch your career. If you don't like what you're doing, switch your career, find a different type of job, develop your skills, upskill yourself, learn new skills, and then switch your job. Rather than moving into a startup world, just thinking, अरे यार मैं क्विट कर देता हूँ, कुछ जमाना चल रहा है, मैं क्विट कर दूंगा और जो है मैं अब जो है वो अपना स्टार्टअप करूंगा. That's not something that I would advise ever. ये मत सोचना कि मेरा बड़ा जो है इसने जो है स्टार्टअप कर दिया, ये सक्सेसफुल हो गया. स्टार्टअप इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ अच्छी खबरों को जो है बड़ा जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बट जो फेलियर्स है उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव फेल्ड इन दिस जर्नी, सो मेनी पीपल हैव बर्नड इन दिस जर्नी, राइट? उनके बारे में कोई बात नहीं करता है. यू लुक एट मी एंड लुक एट माई सक्सेस, बट आप ये नहीं देखते कि मेरे 6-7 साल जो लगे हैं उसमें मैंने 5-6 साल में क्या क्या जो है वो खोया है, 5-6 साल में मैंने कितना स्ट्रगल किया है, किस तरीके से मैं रहा हूं. लेकिन मैंने ये सब क्यों किया? बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट इट. आई रियली इंजॉय डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग. तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे प्रॉब्लम्स आए थे, चैलेंजेस आ रहे थे, 20-20 घंटे में काम कर रहा था. आई वॉज फाइन बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग व्हाट आई रियली वॉन्टेड टू डू. आई वॉज इंजॉइंग इट. मैं अपने काम को इंजॉय कर पा रहा था कि मैं वो कर रहा था जो मैं इंजॉय करना चाहता था. लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, कि जॉब मोनोटोनस है एंड आई वांट टू मूव इनटू स्टार्टअप वर्ल्ड, दैट्स समथिंग दैट आई वुड नॉट एडवाइज एट ऑल. व्हाट आई वुड एनकरेज यू टू डू इज लर्न सम न्यू स्किल्स, गेट अ न्यू जॉब और डू फ्रीलांसिंग. Otherwise don't move into startups. It's something like this which is extremely risky और आपकी बहुत ज्यादा एपेटाइट होनी चाहिए उस रिस्क को बचाने के लिए, और यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक. ये आपको हर कोई नहीं बताता. लोग बोलते हैं चलो चलो स्टार्टअप करो, स्टार्टअप इंडिया. नो वन टेल्स यू द रियलिटी ऑफ इट. So it's a very, very, very dangerous path, and you have to sacrifice a lot of things. If you are willing to sacrifice, if you are in for a long race, आप अपनी जिंदगी के 5 साल देने को तैयार हो और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, तो वेलकम टू द स्टार्टअप वर्ल्ड. अदरवाइज आई वुड नॉट एनकरेज यू टू डू इट. ओके आतिफ, सॉरी, आपका जो क्वेश्चन है वो जॉब से रिलेटेड है. आज जो मैं क्वेश्चन दूं वो टेक स्टार्टअप से रिलेटेड ले रहा हूं, तो विल टॉक अबाउट टेक स्टार्टअप फर्स्ट. All right. So Brijesh Kumar Srivastava is asking basic points to improve business website. Brijesh, good question. So the very first thing that I would like to tell you is that a lot of people out there treat websites as marketing brochure. जैसे हमारे पहले marketing brochure होते थे कि ये जो है 3-4 पेजेस हुए, होम पेज या कवर पेज पे सर्विसेज वगैरह. तो people think that websites are marketing brochures, which is a wrong approach.
Why? Because websites are not just marketing brochure, websites are sales channel. Websites वो होता है जिससे आपके पास सेल्स आ सकती हैं, एक सेल्स जनरेटिंग चैनल होता है। और एक वेबसाइट के सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट मोर लीड्स और गेट मोर कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस, और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है टू एंगेज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, राइट। तो एक जो प्रॉपर वेबसाइट होती है वो स्टार्ट होती है बाय रीचिंग आउट टू योर कस्टमर्स, बाय फाइंडिंग देम वेयरएवर दे आर, रीचिंग आउट टू द राइट कस्टमर्स, अट्रैक्टिंग देम, कि अट्रैक्शन स्पैन जो है वो बहुत कम होता है लोगों का, देन एंगेजिंग देम विद द कंटेंट, देन कन्वर्टिंग देम। कन्वर्टिंग देम का मतलब ये होता है कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं कि उनकी डिटेल्स जो है वो आप कैप्चर कर पाओ, एंड देन अल्टीमेटली एनालाइजिंग देम, नर्चरिंग देम, and then finally turning them into your customers, and that's the objective of the website. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ये 5 चीजें कर रही है या नहीं कर रही है। रीच, अट्रैक्ट, एंगेज, कैप्चर, मेजर, कन्वर्ट, ये चीजें आपकी वेबसाइट कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सारी वेबसाइट पे मिसिंग होता है। हर वेबसाइट का एक गोल होता है, एक मकसद होता है। आप चाहते हो कि कस्टमर जो है उस गोल तक पहुंचे, वो जनरली होम पेज के थ्रू आता है, और वो अल्टीमेटली आप चाहते हो कि वो उस गोल तक पहुंचे। वो गोल क्या क्या हो सकता है? वो गोल हो सकता है कि बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे, या आपको कॉल करे, या आपके साथ कोई चीज बुक करे। इट कैन बी डिफरेंट गोल्स, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द गोल ऑफ योर वेबसाइट, वेयर डू यू वांट टू गेट योर कस्टमर्स, और फिर उस हिसाब से आपको वेबसाइट की जर्नी जो है वो डिजाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका होम पेज है, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आपका एक होम पेज है, उस पे फर्स्ट फोल्ड पे यू हैव गॉट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक कस्टमर आएगा, ही इज गोइंग टू डिसाइड देन एंड देयर कि इफ ही इज गोइंग टू स्टे ऑन योर वेबसाइट और नॉट, एंड इफ ही डजंट लाइक योर वेबसाइट ही विल लीव। तो पहली चीज तो ये है कि ऑन द फर्स्ट फोल्ड यू शुड हैव अ वेरी क्लियर प्रोपोजिशन अबाउट टू थिंग्स। व्हाट डू यू डू, like what do you do, and how can you help your visitor। ये चीज जैसे ही बंदा आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, सबसे पहले उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा ये ABCD है, जो भी है ये क्या करती है, इज इट अ whatever legal service company, and how can you help your customers straight away। The next thing that is extremely important in the first fold of your website is a call to action। कॉल टू एक्शन क्या है कि आप अपने जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसको कैसे नेक्स्ट स्टेप तक जो है वो लेके जाना चाहते हो। फिर एक फाइनल टिप मैं आपको दूंगा वेबसाइट के बारे में। बाकी आप जो है, मेरी एक पूरी वीडियो है हाई कन्वर्जन वेबसाइट, आमिर कुतुब करके आप सर्च करेंगे, एंटरप्राइज मंकी सर्च करेंगे, आपको मिलेगी। एक फाइनल टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ वेबसाइट के बारे में, एनीवन हु इज लिसनिंग आउट देयर, कि जो आपकी वेबसाइट होते हैं उसमें 3 तरह के विजिटर्स जो हैं वो आते हैं। 3 तरीके से लोग किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो वेबसाइट को पे आते हैं और सीधे होम पेज पे आएंगे, और वो सीधे कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे और एक्शन लेंगे। उनको हम बोलते हैं स्किपर्स, क्योंकि वो आएंगे वेबसाइट पे, वो आपका ना पेज वेज देखेंगे और डायरेक्टली जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। दूसरे होते हैं नेविगेटर्स, जो ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पसंद नहीं करते, लेकिन एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू, दूसरे मेन्यू से तीसरे मेन्यू, तीसरे मेन्यू से चौथे मेन्यू जंप करना पसंद करते हैं। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी वेबसाइट का नेविगेशन उस तरीके से बना हुआ है। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं, वो होते हैं स्क्रॉलर्स, जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। स्पेशली मोबाइल यूजर्स का ये तरीका होता है कि वो मेन्यू पे नहीं जाते हैं, वो स्क्रॉल करते हैं, वो पूरा जो है होम पेज का कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे, फिर अबाउट का कंटेंट पढ़ेंगे, और उनको हम बोलते हैं स्क्रॉलर्स। अब आपकी जो वेबसाइट है, ये स्किपर्स, नेविगेटर्स, स्क्रॉलर्स, तीनों के लिए डिजाइन होनी चाहिए, तीनों के लिए इंजीनियर्ड होनी चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटीफुल डिजाइन, लाइक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट इज वर्थलेस इफ इट्स नॉट इंजीनियर्ड प्रॉपर्ली। उसका जो इंजीनियरिंग है वो जो है क्लियर, कंसाइज होना चाहिए, और ये 5 जो है मैकेनिज्म जो है वो क्लियर होने चाहिए। आप enterprisemonkey.com.au पे जाइए, रिसोर्सेज सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको एक ई बुक मिलेगी, फ्री ई बुक है, स्मार्टर वेबसाइट ई बुक। यू कैन डाउनलोड दैट। उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑल राइट, I'm currently in product management. I'm looking to start my own consultancy company and not sure what services I should offer. As I don't have a specialized skill, please guide. So Hussein, the very first thing that you have to do before you think about developing any company is
rather than thinking about कि मैं क्या प्रोडक्ट जो है लॉन्च करूँ और क्या सर्विसेज लॉन्च करूँ, you have to think about what problem should my company solve. And that's the most important question. Look, every company out there is solving a problem. एक या नीड, एक प्रॉब्लम या नीड क्या है? कम्युनिकेशन. कौन सॉल्व कर रहा है? ये मोबाइल कंपनी सॉल्व कर रही है. एक नीड है क्या? आ, अपने बदन को ढकने की, टू 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 ड्रेस वेल. वो कौन सॉल्व कर रहा है? ये टी शर्ट कंपनी सॉल्व कर रही है. बात करने की नीड ये माइक सॉल्व कर रहा है. ठीक, काम करने की नीड ये लैपटॉप सॉल्व कर रहा है. टाइम देखने की नीड ये घड़ी सॉल्व कर रही है. सो एवरी प्रोडक्ट आउट देयर इज सॉल्विंग अ नीड, अ प्रॉब्लम, राइट? अब क्या है कि नाउ a lot of these companies are established, so you have to find a unique need or unique problem that you are going to solve. It's not enough कि बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं मैं भी सॉल्व कर लेता हूं. Because the 5 questions that are asked is, first of all, what problem or need are you solving? You need to be clear in that. Number 2, who are your customers? And everyone cannot be your customer. ऐसा नहीं हो सकता हर कोई कस्टमर हो आपका. कोई सी भी कंपनी उठा के देख लीजिए, ये है गूगल पिक्सल, राइट? एंड्रॉइड का एक फोन है, इसका कस्टमर कौन है? पहली बात तो ये कि एप्पल के फैन जो है इसके कस्टमर नहीं है, राइट? एनीवन हु लाइक्स अ बिट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ओपन सिस्टम, वो उसके कस्टमर्स हैं. गूगल के लॉयलिस्ट जो है वो उसके कस्टमर्स हैं. जो बहुत ज्यादा महंगा फोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसके कस्टमर्स नहीं है. सो इट हैज डिफाइंड इट्स कस्टमर बेस. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ दिस फोन इज कि ये फोटोज बहुत अच्छे लेता है. So it has identified that people who want to take photograph with their phone are its customer, right? Similarly, again, this watch. So Tag Heuer has identified that everyone is not their customer, right? It's not like कि वो हर जगह जो एडवर्टाइज कर रहे हैं या हर कोई खरीद रहा है घड़ी को. It has identified कि working professional या sports people who are interested in sports, who are at an income level above a particular bar, are their customers. So it's only targeting to those people. So you have to identify who are your customers, what are their demographics, where do they live, what do they eat, what is their income level. Number 3, who are your competitors? आप compete किससे कर रहे हो? Extremely important. Who are your competitors? And number 4, how are you better than your competitors? Again, Google Pixel, who is the competitor? Apple is a competitor, Samsung is a competitor. It has defined that the way Google Pixel is better is it has got the best camera in all the phones out there, right? It has got a price differentiation as well. Like Apple iPhone is like $2,000. This is like $700 or $600. So there's a price difference, but it's got the best camera in all the smartphones. That's its differentiation. So what you have to identify is, again, this company, it is in a luxury watch segment. The way it has differentiated itself is that it is the only luxury company that pioneered the smartwatch. So Tag Heuer Connected is the first smartwatch that a luxury company sort of created. There are now more luxury watches that are moving into the smartwatches section. So आपको define करना है कि how are you better than your competitors, and number 5th is how are you going to make money. So if you are in product management, you can definitely create a product consultancy. That's fine. But आपको define करना पड़ेगा कि किस तरीके के products में आप consultancy करोगे. Is it going to be typical type of specific engineered product that you are going to provide your consultancy in? Because a product consultancy is a very broad field. So you have to narrow your field, you have to find your niche, find your competitive advantage, and then you can build your career from there. Muhammad Ishaq, Assalam, what is the scale for tech startup? How much investment is required? So look, there are a lot of tech startups that are bootstrapped, but initially they are bootstrapped, but you need a bit of investment at some stages. So there's different rounds of funding for a tech startup. So the first phase is your bootstrapping. Like when I say bootstrapping means when you are funding it by your own money. Then it comes to an angel investment stage. So once you have developed a basic minimum viable product, a very basic prototype, once you have pushed it out to the market, then you seek for angel investment. Some people seek for angel investment before MVP as well. I do not advise that.
So for example, I am an angel investor. I invest in tech startups at a very early stage. So यहाँ पे the investment is at like $100,000 level, like your very basic level, $1 lakh, like 50 lakh to 1 crore. So that's the very first stage way of raising the fund. The next stage is venture capital. Now venture capital has got series A, series B, series C. So once your startup has is like established enough, it has got using customers, got some revenue, then you go and get money from venture capitalists. And venture capital fund is in millions, so it's like 10 crore, 20 crore, 50 crore, multi-million dollars is your venture capital. And you need a lot of money, like that huge amount of money, to grow your startup aggressively in the market. And that's the reality. And investors are willing to offer that if you are solving a unique niche problem. Okay. Farad Ahmed is saying, yes, Amir, I am writing that. Farad, what I would suggest is that if you can send me the message that you're writing, like a bit of screenshot, then I could look at that and we could look at how we can actually improve that. Hassan Ali, nice suggestion. Thank you so much. Krishna Punke is saying, actually, you put hiring in your profile. I send you message for which profile you're going to hire. You can please tell me in which profile are you hiring. Krishna, sure. So if you go to Enterprise Monkey, my company, and look at the jobs, a lot of profiles that we are hiring for. Like we're hiring for developers, marketers, a lot of different profiles that we are hiring for. Like there are always around 20 to 30 openings in my company at one time. So because we are growing at a very aggressive stage, so you can actually go to Enterprise Monkey and find the job profile that I'm actually hiring for. Janet Zil, I'm an account manager in cryptocurrency, so connect with me and start making money on daily and weekly basis. Do not trust Janet. First talk to her, and then anyone who's sort of like offering you, work with, connect with me and start making money on a daily and daily and weekly basis. Look, earning money is not that easy, and with anything which is around cryptocurrency, uh, there are potentials of making money, there are potentials of losing money as well. So it could be a scam as well. Just do it at your own discretion. Mohammad Faisal is saying thanks, most welcome. Said Ali is saying thank you, Amir, most welcome. Ansh Kumar Sharma, good evening, sir. Good evening, bhai. अंश कुमार शर्मा सिंह, इंडिया में एडटेक स्टार्टअप में क्या चेंज है? इंडिया में एडटेक स्टार्टअप तो अभी शुरू हुआ है. अभी पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी डिसरप्टेड एंड एडटेक इज गोइंग टू बी अ ह्यूज स्पेस इन इटसेल्फ, राइट? अभी आप देखोगे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो पूरा एजुकेशन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटाइज होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अबाउट स्किल्स मोर rather than the universities or degrees. So it's a very good time to go into education tech startup, but do not just copy like an academy or copy upgrad. Think of a problem that's still unsolved. There are so many problems that are actually unsolved still. Think about a problem that's unsolved and बात करो, स्टूडेंट से बात करो, बोलो क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, देखो उसके लिए इज देयर समथिंग दैट्स अवेलेबल. इफ इट्स नॉट देयर, then go and do your venture in edtech. Education technology, health technology, sports technology, and finance technology. These four fields are going to go so ballistic. They are going to be huge. They're going to disrupt the industry forever. So these are like the four fields: education technology, health technology, finance technology, and sports technology. Like these four fields are going to grow pretty fast. They've got huge amount of potential, and they're going to change the way we look at these industries at the moment. All right, Ansh Kumar, Brijesh Kumar is saying, okay, thanks for valuable suggestion. You are most welcome. Don't forget to get that book. I think that would be really beneficial. It's a free book. अंश कुमार शर्मा सिंह, क्या कोई न्यू प्लेयर आ सकता है एडटेक में इन इंडिया और क्या डिफरेंट करे? भाई अभी तो शुरुआत हुई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में. मैंने आपको बताया ना कि आप देखो कि मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नीड्स हैं जो अनसॉल्व्ड हैं. डू अ बिट ऑफ, जाओ घूमो, लोगों से बात करो जो स्टूडेंट्स, और बोलो व्हाट डू यू विश, क्या क्या चीज ऐसी हो सकती थी
देखो क्या प्रॉब्लम्स, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एक्चुअली आउट देयर. Mohammed Sabir Ali, thanks for the session. You're most welcome. Hussein Yunus saying, thank you so much. Amir will work on it. You're most welcome. Yasir Rafaz, Aslam alaikum, Amir. Is there any specific strategy or thumb rule to identify the competition in the market? How to minimize the time period to identify it? Okay. So what I do, it's a very good idea, and this is called your competitive research. What you have to do is you have, like, once you identify the problem that you are solving, think about how people are going to look for the solution for that. फॉर एग्जाम्पल एक आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो एंड दैट प्रोडक्ट इज से कॉलर माइक फॉर इन्फ्लुएंसर्स, लाइक जो इंस्टाग्राम के लिए जो है वो वर्क करे, जो लाइव करते हैं, लिंक्डइन पे लाइव करते हैं. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज कि आप सर्च करो गूगल पे एंड फाइंड आउट हु आर द पीपल हु आर डूइंग इट एट द मोमेंट. क्रिएट अ स्प्रेडशीट, उन सबको लिस्ट करो, उनका स्केल लिस्ट करो, देखो उनकी हिस्ट्री सर्च करो, कब स्टैब्लिश हुई थी, कितने कस्टमर्स हैं उनके पास, कितने डाउनलोड्स हैं, क्या सेल्स है, देखो उसकी आपको रेवेन्यू जो है वो मिले. अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर. एंड हाउ आर दे टारगेटिंग देयर कस्टमर्स, और देखो उसमें कोई गैप है या नहीं. अगर आप कोई डेटा प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत ईजी है, उन सबको फ्री सब्सक्रिप्शन लो और देखो जो अभी प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या गैप है, क्या चैलेंज है, and then just try to solve it from there. So the competitive research is pretty simple. Just do a bit of Google search with specific keywords and then you will be able to find your competitors from there. Adil has to any startup for me, please suggest. Adil, bro, जैसा कि मैंने कहा कि it's not about the idea, it's about the problem that you are trying to solve. So first you have to identify what are the challenges or the needs that are out there that you see in the market. Once you identify that, then you can come up with an idea for the startup. लेकिन problems बहुत है इंडिया में. क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? गड्ढों की प्रॉब्लम है, आने जाने की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जर्नलिज्म में प्रॉब्लम है, लोग किस किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिजली जाने से फ्रस्ट्रेटेड हैं, पानी आने से फ्रस्ट्रेटेड हैं, ग्रोसरी खरीदने से फ्रस्ट्रेटेड हैं, चीज़ों में मिलावट से फ्रस्ट्रेटेड हैं. There's so many, health से frustrated हैं. There's so many things that you could do. Health technology में आप explore करो, you will find a lot of things. Sports technology में explore करो, कैसे grassroots level के sports को जो है वो हम centralize कर सकते हैं, उस पर work करो. कैसे health को accessible बना सकते हैं remote areas तक, उस पर work करो. There's so many problems that are out there. It's about finding the solution to the problems. It's as simple as that. All right. मोहम्मद फैजान सर, आप बताइए मैं किसी कंपनी से जुड़कर बिजनेस कैसे करूं? फैजान, आपको ये देखना है कि आप बिजनेस करना क्या चाहते हैं, और अगर आपको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी कंपनी में थोड़ा सा वर्क करें, कुछ इंटर्नशिप करें और किसी स्टार्टअप में करें, किसी छोटी कंपनी में वर्क करें. वंस यू डू अ बिट ऑफ वर्क इन अ कंपनी देन यू नो, आपको पता चलता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है. और आप बड़ी कंपनी में काम करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि काम जो है वो बहुत होता है. लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में काम करोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. So Krishna Punke is saying, can you please tell me how we can make bidding form for freelancers so we can get project in once bid? So the thing is, Krishna, like it's very difficult. Like the bidding thing is challenging in itself. First, you have to work on your profile. You have to develop your portfolio first. I have done a video on freelancing. Look at that on YouTube, and I'll do a specific video on freelancing as well. इसमें इस process को मैं और detail में explain करूँगा. Because there's a whole process out there. You have to build your brand. You have to develop your clear value proposition. There's a way that you reach out to your customers as well. So I'm going to put it all together for you. Ratan Nath. Hey Amir Bhaiya, how are you? By the way, my question is, क्या इंडिया में e-commerce book website चलेगा? How can I do it at best level? रतन नाथ, सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी है और ये देखना है कि इस वक्त बुक वेबसाइट की कितनी ई कॉमर्सेज हैं. क्योंकि सबसे पुराना आइडिया इंडिया में ई कॉमर्स का फ्लिपकार्ट था और वो बुक्स ही जो है वो बेचता था. मैंने जब शुरू किया था तब मैं देखता था उस वेबसाइट पे जो है वो बुक्स अवेलेबल होती थी. तो जब इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में तो आपका क्या डिफरेंशिएशन है, राइट? हाउ आर यू बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स? इन 5 क्वेश्चन को हमेशा याद रखना. व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, हु आर योर कस्टमर्स, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, हाउ आर यू बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, एंड अल्टीमेटली हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी. So if you don't know how can you be better than your competitors, how are you going to beat them,
then it's not a good idea to get into it. Like मैं sugar coat नहीं करता, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ. Afsana Lashkar, good evening, sir. Very insightful session. Thank you so much. You're welcome. Krishna Punkia, thank you, Amar. You're most welcome. So, guys, this was the session today. What I'm going to do is I'm actually working on developing an app, an online community to connect all people who are willing to learn about entrepreneurship and startups and people who are willing to grow their career. और उस ऐप में you will be able to access all the resources, all the forums, all the discussion, all of them for free. What I'm also thinking of doing is I'm also thinking of developing a lean startup launchpad course that will give you one-on-one insights कि कैसे जो है वो आप अपने बिजनेस को आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, स्टार्टअप आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, कैसे बिजनेस मॉडल कैनवस डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, कैसे फंडिंग रेज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, कैसे अपने स्टार्टअप को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और कैसे अल्टीमेटली अपने स्टार्टअप को आप लॉन्च कर सकते हैं. तो I'm thinking about that. Tell me whether that's a good idea. Should I launch that course? And if I am launching that course, what are the things that I should put in there? Like in the comment section, please मुझे बताइए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानना चाहेंगे, जो उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मोहम्मद साबिर ने पूछा, आमिर भाई, आई एम फेसिंग कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन माय स्टार्टअप, प्लीज एडवाइस. साबिर, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है. कैश फ्लो इज अ ह्यूज इशू इन स्टार्टअप्स. आई ऑल्सो फेस कैश फ्लो इशू एज वेल. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने द वे यू हैव सेट अप योर बिजनेस, और आई हैव टू लाइक गेट इनटू अ बिट मोर डिटेल्स ऑफ दैट एज वेल, सो रीच आउट टू मी. बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि द वे यू हैव सेट अप योर बिजनेस इज कि आपकी जो कॉस्ट है वो पहले स्पेंड हो रही है और आपका रेवेन्यू जो है वो बाद में आ रहा है, और जो उन दोनों के बीच में गैप है वो आपके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टर्न योर बिजनेस मॉडल अराउंड सो दैट हम आपके रेवेन्यू को जो है वो पहले लेके आ सकें और फिर उसके बाद जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो इनकर हो सके. लाइक कैश फ्लो प्रॉब्लम सॉल्व करना का यही जो है वो तरीका है. कभी कभी हमें पूरे बिजनेस मॉडल को उठा के पलटना पड़ता है. I was also facing cash flow problems. I had to like turn myself business around. मैं तो $100,000 जेट में चला गया था. $100,000 मतलब कितना हुआ? 5 करोड़, $1 लाख नहीं, सॉरी, 50 लाख रुपए के जो है वो डेट में जो है मैं चला गया था. It was a very stressful situation for me, but I came out of it. It took me a bit of time to realize कि मैं जिस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ ये सस्टेनेबल नहीं है. So I had to turn my business model around, and then I came out of victorious out of it. So I know कि ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती है, कितनी बुरी होती है, कितनी दुखदाई होती है. एंड आई एम नेवर गोइंग बैक टू दैट कैश फ्लो प्रॉब्लम. एंड होपफुली गेट इन टच विथ मी. होपफुली विल डू अ one-on-one session, and I would be able to sort something out for me. But please, in your comments, let me know whether that tech startup launchpad course is a good idea, and if it's a good idea, what are some of the things that I should actually add. All right, guys, thanks a lot for joining me in this session. It was a very nice talking to you, and then I'll be live again, hopefully next Thursday, 7 p.m. same time. I'll see you then. Bye bye.